अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको जो है रमज़ान बहुत मुबारक हो। अभी जो है अल्लाह पाक ने जो हमें खैर खैरियत से हमें एक और रमज़ान देखना नसीब किया है। तो चले मैं आपके साथ अपने रमज़ान की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ बल्कि। तो फ्रिज की जो है ना वो आज क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो मैं हर 2 वीक्स के बाद जो है ना वो क्लीन करती हूँ, इतना मेरा ख़राब होता नहीं है। तो बस ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इससे जो है ना बस मैं फ्रिज जो है ना वो करूँगी और जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं उनको वो फेंकूँगी। कुछ साफ़ करना है जिसको जो सेट करके रखना है, ताकि रमज़ान में जो हमें फ्रिज जो है ना वो हमें खाली चाहिए होता है। तो हमें जो है ना बाकी चीज़ें जो है ना वो रखनी होती है और एक्स्ट्रा जो भी सामान होगा उसको हम यहाँ पे बाहर साइड पे फेंक देंगे शॉपिंग में अलग से, क्योंकि कुछ जो है वो सालन वगैरह खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, कि जिसमें जो है ना वो स्मेल आ रही है। और पिछले कुछ वीक से जो है ना मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इससे जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो रह गई है, नहीं तो ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो देखें ये सारा जो है ना मैंने सामान जो है ना वो सारा फ्रिज में से निकाल लिया है। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सी जो है ना उसको रखनी है वापस, और कौन सी जो है ना वो फेंकने वाली है या ख़राब होने वाली है। तो देखिए मैं जो है ना वो क्लीन करती रहती हूँ, तो फिर जो मेरा इतना इस दफ़ा जो है ना वो इतना ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ना सफाई करने की ज़रूरत। वैसे जो है ना हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मतलब
हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। कोई किस तरह वॉश करता है, मतलब सॉरी क्लीन करता है फ्रिज को, कोई किस तरह करता है, कोई खाली बस कपड़ा लगा लेता है या कोई स्पंज लगा लेता है तो वो साफ़ हो जाता है। हर हर किसी का अपना अपना एक अपना अंदाज़ होता है। मेरी अम्मी का अलग अपना अंदाज़ है उनका फ्रिज साफ़ करने का, मेरा अपना अंदाज़ है। हर किसी का अपना होता है, ज़रूरी नहीं है सब एक ही तरीके से ही जो है ना उसको यूज़ करें। तो अभी देखिए फ्रिज जो है ना वो अच्छा खासा जो है ना वो क्लीन हो चुका है। इसको मैं थोड़ी देर खोल दूँगी ताकि जो है ना जो भी हमने सफाई शफाई की है स्मेल जो है वो सही से बाहर निकल आए। तो उसके बाद थोड़ी देर तक मैं 5 मिनट्स से 10 मिनट्स के दरमियान के बाद जो है ना उसको मैं भी चीज़ें रखनी स्टार्ट करती हूँ।
a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always in a tighter rush thing. You just always in a tighter can't wait. You just always in a tighter can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around with me. You said that you were down, 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 down. तो ऊपर का भी जो है ना पोर्शन जो है मैंने कहा चले उसको भी जो है ना तो ऐसी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वैसे तो हर चीज़ जो है ना वही तरतीब बना के मैंने रखी हुई है, सिर्फ जो अक्सर जो भी चीज़ होंगी उनको मैं निकाल के रख दूँगी जो फेंकने वाली है, क्योंकि वो भी ऊपर में भी जो है ना वो काफ़ी पड़ी होती है, थोड़ी बहुत पड़ी रह जाती है फ्रिज में। तो मैंने कहा चले जब नीचे के जो एरिया में उसको साफ़ कर रही हूँ तो ऊपर वाले को भी जो है ना लगे हाथ जो है ना इसको भी साफ़ कर दे। सिर्फ खाली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बाकी हर चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे सेट हुई हुई है। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ना आपने कैसे अपनी रमज़ान की जो है ना वो तैयारी की है। बहुत एक्साइटेड होती है जब रमज़ान की आमद होने वाली होती है।
तो क्योंकि उस पर जो है ना बंदा तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की जो है ना इबादत है वो करता है। तो बहुत अच्छा लगता है। इससे जो है ना बच्चे भी सीखते हैं कि रमज़ान में जो है ना वो हम इस तरह इबादत करते हैं। वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन इसमें रमज़ान में जो है ना वो ख़ास करते हैं। तहज्जुद पढ़ते हैं, सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, और कुरान पढ़ते हैं, नमाज वगैरह अल्लाह को ये ज़िक्र करते हैं, याद करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।